Wanusa. Good evening, Wanusa. Good evening, Wanusa. May tagka. Anang bibingan lale. May mamong may le. Wanghay le. Kampay nga langon pile. Wang po. Ay ko le kung human wang. Le. Chong le program. Pi chu rang phang ya chu na ngan. Da thai la le. Kem minister sahab chu le ban lang po. Anu apa? Aho ni. Hujan. Huliapan ko. Wang ham. Kai mo wang ham ji. GPC. Panchayat leaders. Chating mo ko. Umaw lang ko. May huwa mo ko pang may bang. Mabihila ko eh. Anam to pang may manchong papo. Ibibi tayong may to. Manchong papo. Mongkan salam papo. Most respected Honorable Minister Sri Gabriel D. Wangsuji, Srimati Madam Wangsuji, the better half of Honorable Minister, today's guest of honor, Sri Ranphuang Owaji, Secretary Tourism, Government of Arunachal Pradesh, most respected Secretary Animal Husbandry and Veterinary and Dairy Development, Arunachal Pradesh, most respected Secretary Agriculture, Government of Arunachal Pradesh, most respected Regional Officer, National Dairy Development Board, Guwahati, most respected General Manager, National Dairy Development Board, Government of India, New Delhi, most respected DC Longding, ADC Kanubari, SP Longding, Director Tourism, Director Animal Husbandry, the Chief of Kumau, all JPMs, Panchayat leaders, GPC Kumau, Gangbura. It gives me an immense pleasure to be with you all here today as a special guest. My heartfelt thanks to the Honorable Minister for accepting our invitation to grace this occasion. इतना कम समय में मंत्री जी ने हम लोग का जो इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा लगा. एंड माय heartfelt thanks to the Secretary Tourism, Sri Ranphuang Owaji, to accept our invitation as a guest of honor. ये जो लॉकड्राम है, ये पुलिंग ऑफ द लॉकड्राम हम लोग बोलते हैं, लेकिन पुलिंग ऑफ लॉक नहीं है, पुलिंग ऑफ आवर ट्रेडिशन, द पुलिंग ऑफ आवर आइडेंटिटी. ये जो लॉकड्राम है, दिस इज द वेज ऑफ आवर फोरफादर्स. दिस लॉकडाउन कॉल आउट फॉर वॉर, इट कॉल आउट फॉर पीस, it called us for festival, and today it called us to preserve our tradition, our roots. ये बहुत ही important है. I will request
the government of Arunachal Pradesh, most particularly the Department of Indigenous Affairs, the Department of Tourism, to promote and to encourage the people for preservation of old age traditional culture, and also to encourage the tourism in this sector. Since the gathering is full of Wanchu people who will be unable to understand what I say in English, so I will address the local people by our dialect. So please bear with me. Anu apa? Anam bibi ilangan lamai mamong mai pu. Kem Arunachal government Pema Khandu sahab ma atun kwa Department of Indigenous Affairs lang ko makhe kem government kem lockdown payan kem to hongpu chopu kem wanlam kem jang honye nang mai ve mai lang o mai le te pu kem government haji lai le kem chu hala adong apang kumot ya anyi pongwan wang ham ngu wang ham kampai pu haji lai le mamu wan cho ting chu ile pongwan wang kampai hai le te pu gome ne keme ju ku lai le lam ku lai le kem da phong la pha pu ya hanam sing ko MLA kuwe initiate kori la le ya kem imakwa laitika manu same ye tai hunten nu same kem wanlam manam se thela le hom chu ma te request kori pu hala kuwe government request kori pu government ne kemang anyi ile kem tu sai kwa ngun pha sen ko ma hong lo pha pu government to mai ma mong mai pu government to mong mai ko ma chang kem wanlam ile ni phole mai tham ko mat cha ting pu mau ni long khâu ya mai hoa ni locally ngo jan locally ibb kem unity kem strength ni phole jindal tham ko mat ya kuwa thangau đâu lok pan be ko man chang lok drum be ko pulling ko man chang kem identity kem wanlam kem jang ahopu le mai le mo khai sa hai ya ngonu sa ni ima sai pong ma pangoi ye tata to akhe hai kan hai kem bible no za te pu nang chang cha to kan ko to kai le nang tam ji pa to kan la le hai lai le tata to akhe ang ko kan ang ko tu mai wan ma ang ko kem wan lam cha sa mai kem jang cha sa mai le bi bi hanam unity hoi le mai langan la le mai ma le mong mai te pu atha kem memorandum ma pha kwa rang wan ka je chang ko al te le kabli kuwe kem bi bi ngu jan khuli sayang pumau circle kem sayang kem hawan ma kem sio post ma festival ground ma tai ko ale hu chu ala te langole haya hawan omamuk kaye lebe aho hai me haya kem da ma mukha me ongta hi kem jang kem mai la thamang kumot ozi do za ta kak lodan do za ta kak si thung lai hun na hati kem ama thaul kem no tam la la ma do hai ko chu bang ham ko kem wan lamma haya a mukha me le owai la ngau kem ma ovu no ko zai la ngau kem ma wa cho kem mot ya lak phai ma kem ovu no ko la ngau kem me ovu ting sho no kloi la ngau kem me ovu hoza do li la wanai ko identity festival le ata kem encode kori ko
ngau ku ning le identity function chang ya kem identity kem zat kem li kem zang kem pang kem wan lam a hong kwa ye festival chang pu kem o zen pang kwa lau dan na an to le cha wana ya tham dak a e phang cha sa mai an to le ani ko nau sam chan zen tham atha khi hit ve so le ekdam mai le pang ve la ngan la mai ma mong mai le ke me non ko le chi sang ko cham man tai ye kham chi a hai lang ko man chang da phoi su i to kai ju ke me non le kem no tam ku mot kem tam ku mot kem tama aso ku mot no tam ku mot tama aso ko le ke me tali ju azin le jo kai hai dai le kem ta to mai la khe le kal ngo hai haname po chu le nam phoi le ngau la le hanam hosu hanam hosa hanam leader kuile MLA jing bapu hanam cham ngau kai ko ya pai hanam cham la ko hi mo kai hanam thang ma chapang mai la ko hi mo kai ko le kem ani ko wal lamma develop olo hoen ko la hai to azong hai tan tham lai no hai hanam han bang lai ku ano la man phai ku pas ku puri ga hanam puri ga man chang ai ku man ku English anam English man chang ai ku ma tai ku ye anam ye man chang ai hai dai le lai ma khat thai lai no sam pang ai lai ma khat thai tan thama han to le ye kem hawan ma kem productivity a peng ku mat kem hawan sana mai ku mat ata tourism tu na hai ma tele ku tu na hai development hai lam hai sai hai ko le nang ku kem BB develop hoi ku mo do kem develop hoi ha o hai ko le no tam ku mot ye chatting hawan ku mo hawan logo mai hawan mai ma mai tai pu atha rang ti ju kem ma tai le atha aje ngau du ga rang sin kun ha rang sin ai ma ke chingan ku ya ga man tai hai ye chu kem he thai le secretary tourism ang kem he memorandum ma ko do wa hai ye chu kem he tourist destination ang ko ai hai ma step jingla la khanak railing pe mai la anga hama kem he a choli le thela le ha wan nu kem he hama ke ngan le so ke chang chu ha chu kem he jing ai yong an energetic DC Nausan Mr. Kunal Yadav taile anubari ma ADC yong ADC taile hain to le kem SP chu ekdam Nausan yong we chang le home BB to ka ta apang la le department achman ko ta apang la le ko mene kem han ba kang che phang pha se te la ko le haya to apang ku tu ne kem mai le develop hoeng la azong ha develop a kem ti pong la ka pang ku mot kem ti hoeng ku mot atha ye lam sai chu amai ai chating ma ke nok jan man ko lam chu tho ha olevan te pu hai bo ma long dik tik khom chu tia pai ho olevan te pu aname ani ngai social media ma ngan do te pu la mai ma la azong te pu hanam ha to chapang hing ho pe si hanam ha to hanam wak ma wa kang ko chapang a pe si mai kho ya kho le azong te pu hanam osu sa chang ko le Wuhan pakang lang yo phai ho chu nam phoi lang hoi le ku e hanam BB toi le chom pu to pu ai bo ma ani kem wang ham sa tai mau chi kham mang dak pu ya chi kham ya ani ma khe nang e BB ngonu sa halli nang pu yo BB amata samla mo BB ye no yo honne yo BB yang mai ku tu te wan pan discipline no yo wang sa jang ko le ye na lai yo le hon lai yo le mai kio sai honu vokat to ke lam ta wan puta along ku hiye hozap kha to ke hum puta hai hai jing le wang sa jang ko le owa cha no ko chu nang ma ye lai ko le hon lai ko le kon bi bi jang yo bai na ni le nang e bi bi ngu nu sa asam lama e bi bi wan chu asam lama le nang to chu pho chu lang o pu चिंग 4 गांव है करीब इसमें कम से कम करीब इसमें 8-9 हज़ार का पॉपुलेशन है सब एवरी मैन फॉर यहाँ में आया है बिकॉज ये जो सेलिब्रेशन है आज का ये जो कुमाऊँ का जो पैरामाउंट चीफ ऑफ द मुआजन 4 गांव का जो पैरामाउंट चीफ है उनका गम है
उनका घर में ही इसको इंस्टॉल करेगा, क्योंकि वो पैरामाउंट की भी जो भी हो उनका वहाँ से ही मैंने अनाउंसमेंट दिया जाता है, उनका वहाँ से ही मैंने बुलाया जाता है, बुलावा ये करता है। इसलिए ये बहुत मैंने सिग्निफिकेंट है। तो स्पेशली अभी टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा ट्रेडिशनल को, हमारा यूनिटी को बरकरार रखने के लिए भी ये जो हम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये चीज़ को प्रिजर्वेशन करने के लिए, जिंदा रखने के लिए हम लोग ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर से अप्लाई किया था, सरकार से सीएम साहब को नोट लिया, सीएम साहब ने येस किया एंड डायरेक्टर ने येस किया, तो इसमें मैंने इंडिजिनस अफेयर से फंडिंग किया। तो वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिजिनियस जो ट्राइबल ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोशन के लिए अभी का जो सरकार है, पेमा खांडू जी का सरकार, बहुत मैंने इम्पोर्टेंट देते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी ये सब में हम लोग को हेल्प करते हैं। ये हम विल से दिस वॉइस ऑफ एंचेस्टर का वॉइस है ये। आज हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए, रूट्स को प्रिजर्व करने का जमा हुआ है। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि पहले हमारा गांव में हेड हंटिंग जो होता था, तो अलग अलग काम रहता था, तो ये काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये मैंने पहले सोशल मीडिया नहीं था, माइक सिस्टम नहीं था, मोबाइल टेलीफोन नहीं था, तो क्या होता था, एक काम से ही हम लोग मैंने वो करता था, मैंने अनाउंसमेंट करता था, वाइड पब्लिसिटी करने के लिए, पब्लिक को बुलाने के लिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ फायर एक्सीडेंट, और कभी ये जो हंटिंग ये सब के लिए भी हम लोग इसको ही यूज़ करता है। ये एक बहुत बड़ा ही एक PA सिस्टम जैसा है, पब्लिक अनाउंसमेंट जो करते हैं ना, तो PA सिस्टम जैसे इसको काम करता है। ये बहुत मैंने दिस इज़ द इंसिग्निया ऑफ यूनिटी, हमारा जो यूनिटी को लाने के लिए इसको बजाया जाता है। तो मऊ ब्लॉक का रास्ता, सड़क यानी ना, वो तो जब गवर्नमेंट सैंक्शन होगा तब हो जाएगा। देखिए ऐसे होता है, दूध से दही बनाने में भी 24 घंटा समय चाहिए, तो स्कीम लाने के लिए टाइम चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, गवर्नमेंट सीएम साहब ने असेंबली में अनाउंस कर चुका है, उसमें DPR जमा होगा, फाइनेंशियल कॉन्करेंस होगा, तब इसको फाइनेंशियल कॉन्करेंस होने के बाद में गवर्नमेंट से इसका ये टेंडर होगा, और इसका मॉडल मैंने ये फॉर्मेलिटीज़ को मेंटेन करके ही इसको काम करेगा। ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये रोड जो ये सेक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नागालैंड से बॉर्डर होता है, इसलिए इस सेक्टर में रोड होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने भी इसको ऑलरेडी मैंने एश्योरेंस दिया गया है, एंड गवर्नमेंट इज़ रेडी टू सपोर्ट दिस। बस पब्लिक सोचता होगा कि ये कब होगा, वो तो सोचना है, पब्लिक का काम है, लेकिन कुछ भी जो चीज़ है कम पैसा से तो होगा नहीं। ये कम से कम करीब 60 किलोमीटर है, इसमें धनराशि बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसमें अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, इसलिए सच टाइम वी विल वेट, लेकिन होगा। सीएम साहब ने ऑलरेडी इसका मैंने एसोसिएशन दे चुका है, एंड डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग ऑन। थैंक यू।